This is the Ahuja horn speaker. These are the connecting wires. You can increase or decrease the wattage by manipulating this screw actually. You can reduce it. You can have 2.5 watt, 5 watt, 10 watt और 15 watt. अगर आपको कम वाटेज चाहिए आप 2.5 वाट या 5 वाट यूज़ कीजिए. अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 10 वाट या 15 वाट इस्तेमाल कर सकते हो. आप एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसको घुमाइए. स्क्रू ड्राइवर के जरिए आप इसको ऊपर या नीचे ले सकते हो. .5 watt सेटिंग अभी 2.5 watt पे है. The setting is now at 5 watt. This is 5 watt. This is 10 watt and this is 15 watt. This is Ahuja Amplifier UB30. ये Ahuja Amplifier UB30 है. आप either you can use the microphone one input or you can use microphone two input or you can use auxiliary input. This is the on-off switch. This is off. This is on. Off, on. This is for the volume control of microphone input 1, volume control for microphone 2 or auxiliary 2. This is for the tone control. You can keep it on the flat thing for better sound quality. This is the cord for using the microphone. This will go to the SBELL-8011, 8012 unit. This will go to the amplifier input here. This is the rear panel connection. This is 230 volt input. This is the standby fuse, mains fuse. This is where you have to connect the speaker. The speaker points are to be connected. Black wire to common and red wire to the 100 volt in point. Now I am showing you connections to our SBELL-8012 unit. This is earth, this is neutral, this is live. These are the connections. Earth is very important. You need to do earthing to reduce the humming. Earthing करना बहुत जरूरी है, इससे hum sound कम हो जाएगा. ये न्यूट्रल है और ये लाइव है. ऑडियो केबल का छोटा पॉइंट ये लीजिए, ओके, और इसको यहाँ पे डालिए. ऑडियो केबल का दूसरा एंड, take the other end of the audio cable and connect it to the amplifier to the auxiliary input, or you can connect it to the microphone input, or you can connect it to the microphone 1 input. The connections of the speaker, black color to the common and red color to 100 volt.
स्पीकर के कनेक्शंस ऐसे है, कॉमन और ये 100 वोल्ट। आपके पास अगर एक से ज़्यादा स्पीकर है तो वो भी आप कॉमन से 100 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं, तो पैरेलल में। इसके बाद में ये ऑडियो केबल है, ऑडियो केबल को हम लोग ऑक्सिलरी में डालेंगे। टोन कंट्रोल is at flat, volume control is at 1 point, the unit is here, and we are connecting the audio cable to this point. This is the SD card slot. This is the volume control adjust presets. ये वॉल्यूम कंट्रोल एडजस्ट करने के लिए प्रीसेट्स है, और ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट है। When you insert the memory card from here, ये मेमोरी कार्ड डालने पे आपको ये मैसेज आएगा, कार्ड इंसर्टेड। मेमोरी कार्ड निकालोगे तो मेमोरी कार्ड निकालने का तरीका, this is the way you remove, insert, pulled out. This is the message you get when the memory card is taken out. जब मेमोरी कार्ड निकालोगे तो आपको कार्ड पुल्ड आउट मैसेज आ जाएगा। Now I will show you a demo of some of the electronic sounds. ये थोड़े सैंपल साउंड है। These are single gong bells. These are running bells. Now I will show you a sample of the Indian pledge in a female voice. आपको एक इंडियन प्लेज फीमेल वॉइस में आपको डेमो दिया जाएगा। India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. I shall इंडियन प्लेज मेल वॉइस। India is my country, and all Indians are my brothers and sisters. I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage. Gong plus national anthem, Jana Gana Mana. Female message plus Jana Gana Mana. Please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर बंग। Female message plus gong plus Jana Gana Mana. Please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। Male voice plus gong plus national anthem, Jana Gana Mana. Please stand for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत
Different tones plus Janaganamana. Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujala Sukhala Malaya Shitala. Different tones plus Vande Mataram. Vande Mataram. Sujala Sukhala Malaya Shitala. Sasya Shyamala Mataram. Dear students, it's your break time. Good morning everyone, it's your assembly time. We are closed for the day. Hope you enjoyed learning. Thank you.